Bismillahirrahmanirrahim. This is lecture number 12. The name of the paper is Introduction to Linguistics, and the topic is co-articulation, which includes assimilation and elision. This lecture is specifically for the students of BS second semester GDC PUB and also for the students of those colleges which are affiliated with Abdul Wali Khan University. We will do this topic from the book which is prescribed for you, The Study of Language by George Yule. This is, as you can see, page number 46. So we are doing this from page number 46. The topic, as I said, is co-articulation effect. The word co-articulation consists of two words, co, which means together, and articulate, which means to speak. So sometimes some words are spoken as if they have been spoken at the same time. It normally happens that when we speak English, we are not native speakers of English. We speak and pronounce words very carefully and very deliberately. And if we speak our own language, for example, our mother tongue, Pashto, or Urdu, or Punjabi maybe, then the speed is quite fast and spontaneous, and one articulator goes from one position to the other position without stopping anywhere. This happens when we speak our own language, Pashto, Urdu or Punjabi. But when we speak English, we speak and pronounce words carefully and deliberately. However, the native speakers of English, they articulate words, they speak words quite quickly, quite fast, and sometimes two sounds are created in such fast movement that it looks as if these two sounds have merged. And when this happens, that making one sound almost at the same time as the next sound, this process of making two sounds, as we say, co, together, articulate, speak. When we say two sounds almost together because of that speed, this is referred to articulation. And we have two types. One is called assimilation and the other is called elision. And it is from the examples from assimilation and elision that you will understand the process of co-articulation effects fully. So if we do these examples, then you will be able to understand it fully. I will also translate it in Urdu for you. It will then become easy for you to understand, but however we have to do it first in English. If you look at this phrase, if we separately, slowly and deliberately pronounce each word, you would say I have to go. But this is not the type of speed followed by a native speaker. The native speaker is very quick, and you see that in have, this v sound is a voiced sound because the vocal cords vibrate when we pronounce v sound. However, in t sound, the vocal cords do not vibrate. It is a voiceless sound. Due to this voiceless t sound, there is an effect on this voiced sound preceding it, coming before it, and due to the effect of this voicelessness of t, v sound is pronounced as a voiceless sound, f sound. It is because of the effect of this t, which is voiceless, this v sound which is voiced becomes voiceless
f sound. As a result, instead of saying I have to go, we say I have to go. Have to. Instead of saying have to, the English speaker, especially the native speakers, they would say have to. In have to, f sound consonant is voiceless, t is also voiceless, and it is because of the effect of t that v is pronounced as f sound, and it is just like this, have to. This process in which the voiced v sound was changed to voiceless, we say assimilated to voiceless sound, is referred to as assimilation. So this is called the assimilation of voiced to voiceless. This is one example. F and v, they were consonants, but the same thing happens with vowels too. Let us take these two vowels. For example, you have E vowel, you have A vowel. In both these vowels there is no nasalization. The sound doesn't go into your nose. However, when E is pronounced in pin and A is pronounced in pan, this E and A are nasalized. It is because of the following n sound, which is nasal. This E and A sound becomes nasal, and as a result these are represented by these symbols or this transcription. This E in pin becomes E, and in pan becomes A. So you can see that E is assimilated and as to this next n sound, and it is pronounced as n. So we say pin, we say pan sound. Now this is the second example, and in this case we have the assimilation of non-nasal sound to become a nasal sound, and from this we can even make a rule that any vowel becomes nasal whenever it immediately precedes a nasal. For example, in ping, E vowel comes first, precedes n vowel, it becomes nasal. In pan, an a vowel is nasalized because of the it precedes the nasal n and it becomes nasal. So whenever a vowel is preceded or comes before the nasal, it will be pronounced into the nose, it will become nasal. So this was the second example of assimilation. Let us take the third example. Can, for example, is pronounced and represented like this and pronounced as can, and it is the slow deliberate pronunciation. However, when we pronounced can in this phrase, after the nasal n comes g. G sound is a velar sound because your velum is touched with the back part of the tongue, and due to this velar sound g, there is an effect on the nasal sound n, and this n becomes a velar sound ing, and instead of saying I can go, we say I can go, king. Though normally non-native speakers do not do this, but the native speakers, those people who have their mother tongue as English, they do this, and instead of can go, it is said like I can go, and n becomes n sound. This is called assimilation.
There is assimilation in this you and me if they are separately pronounced, but this is not the actual pronunciation when you are quickly producing them. This is then pronounced and, which is like this, and transcription is pronounced as n and d is deleted un. In this phrase it becomes you and me like this. This is the transcription, you and me, and we do not say fully and. This process, as we did in different examples, is referred to as assimilation. Let me do these in Urdu for you so that you understand them fully. एक तो हमने पढ़ा कि हमारा आज का टॉपिक को-आर्टिकुलेशन इफेक्ट्स है. इफेक्ट असर को कहते हैं. को का मतलब है टुगेदर, इकट्ठा. आर्टिकुलेट का मतलब है स्पीक. जब हम दो साउंड्स को इकट्ठा यकमुश्त एक जगह पे ऐसे पढ़ते हैं स्पीड की वजह से, एक अंग्रेज़ ऐसे अमूमन करता है जो नॉन नेटिव है या हम हैं, तो हम प्रोनाउंस केयरफुली करते हैं, तो हम ऐसा नहीं कर सकते. तो दो अल्फाज एक जगह पे प्रोनाउंस हो जाते हैं और इसको को-आर्टिकुलेशन कहते हैं. ये उर्दू और पश्तो में भी इसकी मुख्तलिफ एग्जांपल्स हैं और ये इंग्लिश में हम कर रहे हैं. दो तरीक़ों से ये को-आर्टिकुलेशन हो सकती है, या असिमिलेशन के ज़रिए और या एलिजन के ज़रिए. तो हम देखते हैं कि असिमिलेशन के ज़रिए कैसे होता है. मैं इसको रीड कर देता हूँ, ट्रांसलेट कर देता हूँ उर्दू में. इन मच ऑफ द प्रीसीडिंग डिस्कशन, इससे ऊपर जो डिस्कशन हुई ये वाली जो हमने की लेक्चर नंबर 11 में और 10 में, we have been describing speech sounds in syllables and words. तो हमने साउंड्स को डिस्क्राइब किया, स्पीच साउंड्स को, syllables में भी, words में भी, as if they are always pronounced carefully. गोया इसको हमेशा बड़े एहतियात से प्रोनाउंस करें, डिलिबरेटली और आहिस्ता आहिस्ता करें, ऑलमोस्ट इन स्लो मोशन. ये डिस्कशन थी हमारी सी, और हमने ऐसे किया गोया ये अल्फाज स्लोली बोले जाते हैं. स्पीच इज़ंट नॉर्मली लाइक दैट. अमूमन जब हम बोलते हैं या जब नेटिव अंग्रेज़ बोलता है, नेटिव स्पीकर, तो वो ऐसे नहीं बोलता. मोस्टली आवर टॉक इज़ फास्ट एंड स्पॉन्टेनियस. अक्सर हमारी बात बड़ी तेज़ और अचानक होती है, जल्दी होती है, बग़ैर किसी हेल्प के होती है. एंड इट रिक्वायर्स आवर आर्टिकुलेटर्स, और हमारे जो आर्टिकुलेटर्स हैं जिसके ज़रिए हम बात निकालते हैं, मुंह है, ज़बान है, हमारे होंठ हैं, टू मूव फ्राम वन साउंड टू द नेक्स्ट विदाउट स्टॉपिंग. हमारे आर्टिकुलेशन एक साउंड से दूसरे साउंड की तरफ जाते हैं और रुकते नहीं हैं. द प्रोसेस ऑफ मेकिंग वन साउंड ऑलमोस्ट एट द सेम टाइम एज द नेक्स्ट, ये अमल जिसमें एक साउंड उसी वक्त पैदा होता है जिस वक्त दूसरा पैदा होता है, इसको आर्टिकुलेशन, को-आर्टिकुलेशन. तो इसको ये कहते हैं. देयर आर टू वेल नोन को-आर्टिकुलेशन इफ़ेक्ट्स. ये इफ़ेक्ट्स जो अमूमन जाने पहचाने हैं वो दो तरह के हैं, डिस्क्राइब्ड एज एसिमिलेशन एंड इलिजन. तो ये दो हैं. एसिमिलेशन को हमने डिस्कस किया था, मैं ज़बानी पहले बता देता हूँ. हमने आई हैव टू गो को पहले किया. जब आप इसको आहिस्ता से बोलते हैं तो फिर तो इस तरह बोला जाता है, लेकिन जब एक अंग्रेज़ इसको बोलता है, क्विकली बोलता है, तेज़ बोलता है, तो वो साउंड जो कि वॉइस्ड है, ये वॉइसलेस साउंड हो जाता है इस ट साउंड के असर की वजह से, जो कि वॉइसलेस है. और यूँ हैव टू को हैव ट पढ़ते हैं. ये इसकी रिप्रेजेंटेशन है, बिल्कुल इस तरह जैसे ये लफ्ज़ है हैव ट, और इसमें वह साउंड जो है ये ट साउंड के साथ मिल गया है और फ हो गया है, हैव ट. यही एसिमिलेशन होता है जिसमें वॉइस्ड साउंड ये वॉइसलेस साउंड में एसिमिलेट हो गया. ये एक एग्जांपल है, हम इसको पढ़ लेते हैं. एसिमिलेशन टॉपिक है इसका. व्हेन टू साउंड सेगमेंट्स, जब दो साउंड्स हैं, उनके सेगमेंट्स हैं, टुकड़े हैं, अकर इन सीक्वेंस में आ रहे हैं, एंड सम एस्पेक्ट ऑफ वन सेगमेंट, और किसी एक साउंड का एक हिस्सा इज टेकन और कॉपीड बाय द अदर, वो या ले जाता है या कॉपी करता है दूसरा, वह कॉपी हो जाता है ट में, ट जो कि वॉइसलेस है
وہ ف کے ساتھ ہو جاتا ہے. دا پروسیس از نون ایز اسیمیلیشن. تو اس کو آپ اسیمیلیشن کہیں گے. اف یو تھنک آف دا فزیکل پروڈکشن آف اسپیچ، جب ہم فزیکل پروڈکشن آف اسپیچ کے بارے میں سوچتے ہیں کہ یہ کیسے بنتا ہے، وی ریئلائز دیٹ دس ریگولر پروسیس ہیپن سمپلی بیکاز اٹس کوئکر، ایزیئر اینڈ مور ایفیشینٹ فار آور آرٹیکولیٹرز. یہ اس لیے ہوتا ہے کہ ہمارے جو آرٹیکولیٹرز ہیں، ہونٹ ہیں، زبان ہے، دانت ہیں، ان کے لیے یہ تیز بھی ہوتا ہے، آسان بھی ہوتا ہے، زیادہ کارکردگی والا ہوتا ہے ایز دے ڈو دیئر جاب. جب وہ اپنا کام کرتے ہیں، آواز نکالتے ہیں. تو تھنک آف دا ورڈ ہیو بائی اٹ سیلف، اگر الگ سے لے لیں تو اس طرح ہوگا. دین تھنک آف ہاؤ اٹ از پروناؤنسڈ ان دا فریز آئی ہیو ٹو گو ان ایوری ڈے اسپیچ. پھر اس کو دیکھیں کہ ایوری ڈے اسپیچ میں یہ ہیو ٹو ہوتا ہے، ہیو کو ہیف پڑھتے ہیں. تو یہ جو وہ ساؤنڈ ہے یہ ف پہ مکس ہو گیا ہے. ان دس فریز ایز وی اسٹارٹ ٹو سے the t sound into which is voiceless we tend to produce. جب ہم t پروڈیوس کرتے ہیں جو وائسلیس ہے تو ہمارا رجحان اس طرف ہوتا ہے to produce a voiceless version of the preceding sound. تو اس سے پہلے جو ساؤنڈ ہے وہ اس کا وائس لیس کوئی ورژن دیں، اس کا وائس لیس ورژن ف ہی ہے. resulting in what sounds more like ف than وہ، جو ف کی طرح لگے گا. have. So we typically say have in this phrase and you may even see it written informally as have. کبھی کبھی اس کو لکھتے بھی ایسے informal اس کو کہتے ہیں، صحیح نہیں ہے، آپ مت لکھا کریں. Showing how the assimilation from a voice to a voiceless sound is perceived. تو یہ assimilation ہو گئی وائس سے وائس لیس ف، و سے ف کی طرف. تو یہ ایک ایگزامپل. دوسری ایگزامپل جو ہے واول ساؤنڈ کی ہے، ای اور اے ساؤنڈ کی. تو اس میں کوئی ناک میں آواز نہیں جاتی، لیکن اگر یہ ہم پن اور پین الفاظ میں لے لیں تو یہ ای نیزلائزڈ ہے، یہ ای کی طرح پڑھا جاتا ہے اور یہ سیمولیشن کہلائے گا. پین یہ این کی طرح پڑھا جائے گا، کو ایسے لکھیں گے اور این کو ایسے لکھیں گے. اس کے اوپر یہ ڈائیکریٹک ہے، یہ ڈالا جاتا ہے. تو رول ہم یہ بناتے ہیں کہ جب بھی کوئی واول ساؤنڈ ای یا اے کے بعد نیزل ساؤنڈ آئے گا، جیسے ان ہے یا ہے، تو یہ جو واول ساؤنڈ ہے یہ خود بخود نیزلائزڈ ہو جائے گا. تو دوسری ایگزامپل ہے، اس کو سنیں. واولز آر آلسو سبجیکٹ ٹو اسیمیلیشن. واولز میں بھی اسیمیلیشن ہوتی ہے. ان آئسولیشن الگ سے پڑھیں. وی وڈ ٹپیکلی پروناؤنس ای اے وداؤٹ اینی نیزل کوالٹی ایٹ آل. ای اے میں کوئی نیزل کوالٹی نہیں ہے. however یعنی ناک میں نہیں جاتے یہ آوازیں. however when we say words like pin and pan in everyday speech, the anticipation of forming the final nasal. anticipation کا مطلب ہے کہ پہلے سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ ای کو اور اے کو این پڑھا جائے گا. consonant will make it easier to go into the nasalized articulation. تو یہ آسان بھی ہوگا کہ اگر یہ نیزلائز ہو جائیں in advance پہلے ہی سے and consequently، اور نتیجتاً the vowel sounds in these words will be in more precise transcription. صحیح ٹرانسکرپشن اس کا ای اور این ہوگا. This is a very regular feature of English speakers pronunciation. یہ ریگولر فیچر ہے اور یہ انگلش اسپیکر نیٹیو اسپیکرز خاص طور پہ اسی طرح کرتے ہیں. It is so regular، یہ عام طور پہ بہت ریگولر ہے. In fact that a phonological rule can be stated in the following. آپ ایک phonological rule بیان کر سکتے ہیں. Any vowel becomes nasal whenever it immediately precedes a nasal. جب بھی کوئی واول نیزل سے پہلے آئے گا تو وہ نیزلائزڈ ہو جائے گا. یہ دوسری ایگزامپل تھی. تیسری ایگزامپل کین کی ہے. جب الگ ہو تو یہ کین ہے، لیکن جب یہ آئی کین گو میں آپ پڑھتے ہیں تو یہ این گ کے ساتھ مکس ہو کے اینگ آواز نکالتا ہے، جس کا سمبل یہ ہے، اور یہ پڑھتے ہیں آئی کین گو. تیسری ایگزامپل. چوتھی ایگزامپل یو این می میں اینڈ نہیں ہے، ان پڑھا جاتا ہے تو اینڈ. یو این می
तो ये भी एग्जाम्पल है। दिस टाइप ऑफ एसिमिलेशन प्रोसेस अकर्स इन ए वैरायटी ऑफ डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। मुख्तलिफ कॉन्टेक्स्ट में एसिमिलेशन हो सकता है. By itself the word can may be pronounced as can, but when we say I can go, the influence of the following velar, इस velar g g sound जो है इसका असर होता है साउंड पर, will almost certainly make the preceding nasal, जो पहले nasal आ रहा है in, ये हो जाएगा come out as ing, the velar nasal. इसको velar nasal कहते हैं क्योंकि velum जो है ये लगता है ज़बान के साथ आखिरी हिस्से के साथ और ये पैदा होता है. रादर देन नहीं होगा, अंग होगा जो कि एल्वियोलर नेज़ल है. द मोस्ट कॉमनली ऑब्जर्व्ड कन्वर्सेशनल वर्जन ऑफ द फ्रेज इज़, तो ये एक आम वर्जन इसका होगा आई कैन गो. इंस्टेड ऑफ सेइंग आई कैन गो, दैट इज़ ऑल्सो करेक्ट, वी से आई कैन गो. नोटिस दैट द वावल इन कैन हैज़ ऑल्सो चेंज टू श्वा. ये ए साउंड की बजाय अ हो गया है जो कि श्वा कहलाता है. फ्रॉम द आइसोलेटेड वर्ड वर्जन ए की बजाय ये अ श्वा हो गया. इन मैनी वर्ड्स स्पोकन केयरफुली, बहुत सारे अल्फाज जब आहिस्ता से बोलें द वावल रिसीव स्ट्रेस, तो वावल में स्ट्रेस आता है, तेज़ी से बोलें. बट इन द कोर्स ऑफ ऑर्डिनरी एवरीडे टॉक, लेकिन जल्दी बोलें एवरीडे स्पीच में, दैट वावल में नो लॉन्गर रिसीव एनी स्ट्रेस, तो इस पर स्ट्रेस नहीं आएगा. एंड नेचुरली रिड्यूस टू श्वा, और ये तब्दील होगा श्वा में. वी में फॉर एग्ज़ाम्पल प्रोनाउंस एंड, जो कि असल में एंड है, डा है आखिर में, बाय इटसेल्फ अलग से यूँ होगा. बट इन द नॉर्मल यूज़ ऑफ द फ्रेज यू एंड मी वी यूजुअली से अन. और ये भी एग्ज़ाम्पल है एसिमिलेशन की. तो ये आपको रेडी भी कर दिया है. बाज़ लोग कहते हैं आवाज़ का मसला है, आवाज़ के लिए आप हाई डेफिनीशन है उसको डाउनलोड करें. 1080 हाई डेफिनीशन, ये ओरिजिनल आपको डाउनलोड करके देगा. वी विल नाउ डू द नेक्स्ट टॉपिक, इलिजन इन इंग्लिश, एंड देन वी विल do it in Urdu as well so that you understand it in a better way. If you look at this word elision is a noun. Its verb is elide. And elide means to leave out something, किसी चीज़ को बाहर छोड़ देना. That is the meaning of elide, also of elision. For example, if you take this example, you and me, if we pronounce separately, it is like this. In this case, the d of and is left out, is not pronounced, and this is therefore the example of elision. We did this is in you and me as the example of assimilation, because a n which is nasal and which is nasal, in between these two comes d, which is a stop, which spends a lot of energy. So in order to avoid this, it is not pronounced. Therefore we did it as the example of assimilation. But now we are taking and separately, pronouncing it n, we are leaving out d, and therefore this is the example of elision. The idea is, as I said, that this d consonant is coming between two nasals, and and therefore we don't want to devote speech energy, much speech energy to d sound. As a result, it becomes un, you and me. Then it is also said that when instead of saying you and me, we say you and me, we should not say that it is actually laziness. This is not laziness, this is efficiency, this is your skill in English that you are doing this. The other example is friendship. When you don't pronounce d and you say friendship while speaking little quickly, this leaving out d sound again will be called elision, friendship. Therefore, elision is defined as this process of not pronouncing a sound segment
that might be present in deliberate or careful pronunciation of a word in isolation is described as elision. What is elision? Elision is the process in which you do not pronounce a word which is often pronounced when you deliberately or carefully pronouncing a word. This is called elision. This is an example of aspects if you carefully pronounce it, but in quick pronunciation it becomes aspects without T. The same is the case with he must be if careful pronunciation is done. By a native speaker, it is pronounced as he must be, like this. He must be. T is elided. There is an elision of T. There is again an elision in these three words. We asked him if separately pronounced, but in quick succession it is pronounced as we asked him. We asked him. And there is the elision of D sound, and there is a conversion to T sound. This also happens with vowels, and vowels disappear. For example, in every, E disappears as you have this transcription. In interest, this is deleted or it disappears. It becomes interest. In cabinet, instead of saying, we say cabinet. A is deleted, which is a vowel. Instead of saying camera, we say camera. Instead of saying prisoner, we say prisoner. Instead of suppose, we say suppose. And this actually is not laziness, but it is, as we said, efficiency. इसको ज़रा उर्दू में भी सुने ताकि आपको समझ आए. अब आप ज़रा उर्दू कन्वर्जन को थोड़ा सा छोड़ ही दे तो अच्छा है. ये आहिस्ता आहिस्ता इसको ख़त्म करना चाहिए. इट शुड ऑल बी इन इंग्लिश नाउ. आपको आदत पड़ जानी चाहिए, लेकिन बहरहाल मैं सुना देता हूँ उर्दू में. तो उर्दू में अब सारा पढ़ लेता हूँ आपके लिए. इन द लास्ट एग्जाम्पल इलस्ट्रेटिंग द नॉर्मल प्रोनाउंसिएशन यू एंड मी, ये जो आखिरी एग्जाम्पल था हमने किया यू एंड मी का, द ड साउंड ऑफ द वर्ड एंड वाज नॉट इंक्लूडेड इन द ट्रांसक्रिप्शन. ट्रांसक्रिप्शन में ये इसकी ट्रांसक्रिप्शन है. ये ड साउंड जो इस ट्रांसक्रिप्शन में मौजूद है इधर नहीं है, तो ये नहीं था. दैट्स बिकॉज इट इज़ंट यूजुअली प्रोनाउंस्ड इन दिस फ्रेज, क्योंकि ये एंड ड प्रोनाउंस ही नहीं होता, यू एंड मी होता है. इन द इन्वायरमेंट ऑफ प्रीसीडिंग नेज़ल, क्योंकि ड से पहले प्रीसीडिंग नेज़ल अन है एंड फॉलोइंग नेज़ल है, और ये बीच में है ड. वी सिंपली डोंट डिवोट स्पीच एनर्जी, तो हम साउंड एनर्जी इतनी देते नहीं है टू इंक्लूडिंग द स्टॉप साउंड. ड स्टॉप है, आपको पता है. दिस इज़ंट लेजीनेस, हम इसको सुस्ती नहीं कहते, इट्स एफिशिएंसी. ये कारकर्दगी की अलामत है. देयर इज़ ऑल्सो टिपिकली नो ड साउंड इंक्लूडेड इन द एवरीडे प्रोनाउंसिएशन ऑफ द वर्ड लाइक फ्रेंडशिप. फ्रेंडशिप भी बोलते हैं तो इसमें ड नहीं बोलते, ये भी इलिजन है. तो तारीफ़ इसकी ये हो गई, दिस प्रोसेस ऑफ नॉट प्रोनाउंसिंग ए साउंड सेगमेंट, ये जो अमल है जिसमें एक साउंड टुकड़ा, सेगमेंट टुकड़ा प्रोनाउंस नहीं होता, दैट माइट बी प्रेजेंट, ये उस वक्त तो मौजूद होता है इन द डिलिबरेट केयरफुल प्रोनाउंसिएशन, जब आप आराम से और एहतियात से प्रोनाउंस करते हैं ऑफ ए वर्ड, लफ्ज़ को इन आइसोलेशन अलग से. तो ये जो अल्फाज का छोड़ना है इज़ डिस्क्राइब्ड एज एलिजन, ये एलिजन कहलाता है. इन कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स, ये आप पढ़ चुके हैं कॉन्सोनेंट क्लस्टर, जैसे हमने पढ़ा था स्ट्रेस में स ठ र, ये कॉन्सोनेंट क्लस्टर. स्पेशली इन कोडा, जो कि आखिर में आता है, कोडा पोजीशन, ठ इज़ कॉमन कैजुअलिटी इन दिस प्रोसेस. अमूमन ठ जो है ये छोड़ दिया जाता है एज इन द टिपिकल प्रोनाउंसिएशन ऑफ एस्पेक्ट्स. ठ एस्पेक्ट्स पढ़ देते हैं. ही मस्ट बी को ही मस्ट बी पढ़ देते हैं. वी आस्क्ड हिम को वी आस्क्ड हिम पढ़ देते हैं. और इसमें एलिजन है के का, ये क साउंड
وینش ہو گیا ہے. واولس کا بھی اسی طرح ہوتا ہے. ایوری میں ہے, انٹرسٹ میں ہے, کیبنٹ میں ہے, کیمرہ میں ہے, پرزنر میں ہے, اور سپوز میں ہے جو کہ سپوز ہے. تو یہ ایک بہت ٹیکنیکل پرچہ ہے. یہ ختم ہوا. یہ اس میں یہی بات بتائی گئی ہے کہ ایلیژن اور اسیمیلیشن یعنی کو-آرٹیکولیشن یہ کوئی بری بات نہیں ہے. یہ ایک نیٹو اسپیکر بولتا ہے، اور اگر نیٹو اسپیکر اس کو قصداً آہستہ سے بولے تو اس کی اسپیچ ان نیچرل ہو جائے گی اور آرٹیفیشل ہو جائے گی. ہم مجبوراً بولتے ہیں جو نان نیٹو اسپیکرز ہیں ان کو نیٹو اسپیکرز کی نقل کرنی چاہیے اور اس طرح بولنا چاہیے. یہ یہاں پہ یہ اتنا ضروری نہیں ہے. سو تھینک یو اینڈ گڈ لک.